and development of northeastern region to be clearer. To not just declare it open, but also to Friends, I welcome all the participants to the first of its kind global summit on reimagining museums in India. India is a land of rich cultural heritage, and this needs to be preserved. This needs to be propagated and perpetuated. Preserved so that our past continues to live on our achievements and accomplishments appreciated. Propagated globally so that the world can understand India's contribution. Perpetuated for posterity so that younger generation can access this. Museums provide a wonderful medium to achieve these goals. The flux of creativity made Indian civilization one of the most glorious of culture in the world. Echoes of the tradition of great ideas need revival. Friends, with the same vision in mind, our Honorable Prime Minister, Government of India, Sri Narendra Modi ji, has given us the mantra of Vikas, our Virasat, development and heritage. The Vikas, the development, we ensure that the poorest of the poor receive the benefits of development. The Virasat, the heritage, we protect our wonderful heritage and culture. Friends, there are nearly 1,000 museums in India. These include museums under the Government of India, state governments, district level museums, museums under universities, private museums. Friends, I want to highlight that various government ministries support the development and protection of the museums of Government of India, and these include Ministry of Culture, Ministry of Railways, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Defence, Ministry of External Affairs, Ministry of Textiles, Ministry of Education. One of the important of the ministry I head, the Ministry of Culture, is the development and upgradation of museums within the country in India. Since 2014, 110 museums have funded by the Ministry of Culture. Some of these are upgraded, while others are being built from scratch. A total 50 of these museums have now been completed. The Archaeological Survey of India, which function under the Ministry of Culture, runs 52 museums all over the country. The tribal community in India has played an important role in India's independent movement, but they have not been recognized adequately. To recognize the contribution by tribal freedom fighters in our India independence struggle, the Indian government, under leadership of the Prime Minister Narendra Modi, is setting up
10 tribal freedom fighters museums across the country, in one museum in Hyderabad, Telangana, and one museum in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, one museum is Ranchi, Jharkhand, like Goa and other locations also. We have 37 railway museums that showcase the rich heritage of our railways history. 34 are the already operational in railway museums, 3 under construction. We have also crafted the textile museums in India to showcase our rich textile tradition, and defense museums that showcase our military history. To include scientific temple of large numbers of science museums are also being supported by the Government of India Cultural Department. Administers 25 science museums and centers, have developed more than 25 science museums and handed over them to the state governments and institutions. He is developing 18 more new museums. I will also like to highlight a few important museums which have been recently built by our department, are being constantly upgraded or under construction by the Government of India under Prime Minister Narendra Modi leadership. To name a few, these are, everybody knows, Prime Minister Office, Defense Ministry, Home Ministry, Finance Ministry, that offers, we want to convert this North Block and South Block as a museums in future that will be provide cultural gravities and democratized the heart of the capital city, Delhi. The Prime Minister's Museum will showcase the journey of various Prime Ministers who have served our country. This is near completion and will reflect the democratic ethos of the great land of India. National Gallery of Modern Art houses some of the best contemporary and modern art New Delhi, where new historic galleries have been added. Gandhi Smriti Museum dedicated to Mahatma Gandhi in New Delhi. The Red Fort Museum, the historical cultural heritage, which will become a center of historical research and learning with cluster of museum inside them. Jammu Kashmir and Armor Arms Museum, JNK Museum, Freedom Struggle Museum, we are constructing at Red Fort. National Archives that houses old records and letters of values of the Government of India. All these museums continuously need to reinvent themselves to the relevant for the 21st century in the new digital age. A range of technological tools which harvest the entire spectrum are available, including digitalization technologies, virtual reality, augmented reality, 3D printing. Other new emerging technological advances are changing the ways we interact with each other and our cultural heritage. Friends, we also need to ensure that these museums are more accessible. We want to evolve way to democratize these museums spaces to
so that citizens can own it like they own parks and playgrounds. In these times, the need of museums to operate remotely has also become an area of priority. The global summit will therefore facilitate cultural exchange and promote international cooperation with participants from across the disciplines. I am glad these distinguished participants are coming together, access deliberately and brainstorm on global best practices in the arena. The Ministry of Culture is working on the inclusive model that involve artists, museum professionals, and educators, and places them at the core of museums in the country. India, being one of the oldest civilizations, has much to share with the world. Our accomplishments in arts, literature, and science and unique, and so is our civilization journey will date. The demands a closer partnership between science, technology, and versatility in the field of museums. Today, I am sure that the exchange of thoughts between various distinguished scholars from all over the world will enhance the importance of museums. I would once again like to thank the officials of my ministry and the other organizations for this summit. With these thoughts, now I want to declare the summit as open. Committees. The COVID-19 emergency has brought on enormous new challenges and exacerbated some of the old ones. While some museums have reopened with limitations, others remain closed. As we slowly emerge from the pandemic, we have both the opportunity and the duty to build back better. Beyond mere recovery, we must reimagine the museum of the future. I am confident that the museum of the future is already being built. Every day, museum events are key issues. In a world where 41% of the population has no internet access, innovation must be inclusive, and inclusiveness requires innovation. The climate crisis continues to impact our natural and cultural heritage globally. The dramatic loss of biodiversity and the effects of climate change show us how close the relationship between man, the biosphere, and the geosphere is. The cultures of the Anthropocene are suffering because landscape, natural resources, and livability are endangered. Indigenous communities are at the forefront. Not only are their livelihoods threatened, also their cultural heritage cannot survive without their natural habitats. Even native languages are in constant decline as a result of the climate crisis. The United Nations Sustainable Development Goals are essential for a post-pandemic
recovery that aims for greener and more inclusive economies and for more resilient society. Museums are one of the most trusted institutions. Museums are in a unique position to promote inclusion and diversity, support environmental policies, disseminate scientific information, and foster sustainable practices in the local communities. In 2019, ICOM's General Assembly in Kyoto, Japan, passed the resolution on sustainability and the implementation of Agenda 2030. Achieving the United Nations Sustainable Development Goals and fighting for climate justice have become the fundamental reference point for ICOM's work over the next decade and beyond. ICOM is working closely with international organizations to make sure that decision makers across the world integrate museums into their policies addressing heritage, sustainability, and climate crisis. I had the privilege to represent ICOM and advocate the Ministry of Culture, Government of India for organizing this global summit on reimagining the museums in India. With its rich cultural diversity and wealth of heritage, and its global standing as a vibrant democracy, India is well positioned to take a leadership role in developing an inclusive, innovative, and inspiring museums. And I'm very sure that this initiative will go a long way towards achieving these goals, not only for India, but for the rest of the world. It is worthy mentioning here that museums are not just buildings that house collections. They are rich repositories of cultural knowledge and experiences that go a long way in raising awareness and instilling a sense of pride among the citizens, and particularly children and the youth. They are potentially centers for family interactions and knowledge building. Museums also confront daunting challenges of conservation and management of diverse range of collections, especially in the light of threats of climate change and increased frequency and intensity of disasters and conflicts. During the COVID pandemic, museums have been confronted with numerous challenges: periods of lockdown, loss of revenues, and livelihoods of communities have all diversely affected the maintenance of museums. However, at the same time, museums have also demonstrated their resilience and adaptability by providing innovative digital experiences through virtual medias and brought the collections to the doorstep of its users. ICROM has been at the forefront of developing various activities aimed at capacity building and advocacy for conservation and management of cultural heritage, especially in the light of all these challenges being confronted at present. Research, capacity building, and advocacy of conservation and management of museums and their collections has been the priority areas for ICROM ever since its inception. Some of our notable international and regional programs that have addressed these needs of museums and the collections include Collegia, risk management of collections, a reorganization of museums collections known as REORG, and museum energy programs. Recently, through a strong coalition of international partners covering all typologies of heritage collections in museums, archives, and libraries.
We have launched a new initiative called Our Collections Matter. This initiative will provide practical tools and build capacities to enable collections-based institutions to achieve their maximum potential, helping making this world a better place. We are immensely proud of our alumni, including countless museum professionals from around the world who have been contributing towards setting up innovative and sustainable conservation and management practices. ICROM has shared a very special relationship with our valued member state, India, and over the years, we've only strengthened our collaboration with many Indian institutions through various programs and activities. Some of these initiatives include training courses on disaster risk management of cultural heritage, organized in collaboration with the Archaeological Survey of India, reorg courses organized in partnership with the National Research Laboratory, courses on sound and image collections conservation, the SAOMA, in collaboration with the National Museums, Delhi, and National Film Institution, Pune. First aid to cultural heritage in the aftermath of the Kerala floods in partnership with the Government of India, State of Kerala, and ICOMOS. And last but not the least, emergency simulation drill for cultural heritage with National Disaster Response Force of India in Peru for the BIMSTEC countries. We are immensely proud of our alumni from India who have been contributing immensely to the challenging but very important task of conservation and management of heritage. I have been particularly impressed by the young talented Indian heritage professional from India and the pleasure of interacting with them during my last visit to India in 2018. ICROM looks forward to strengthening our partnership with India and its strong cultural institutions for the benefit of the world. We stand ready to provide our services to share knowledge and build capacities of Indian heritage professionals and institutions. I also take this opportunity to convey my great wishes for a great success of the Global Summit on Reimagining Museums in India and look forward to the successful outcome of this Global Summit. I thank you. Thank you, Dr. Weber Nadoro. And here I'm very pleased to introduce my friend and इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार भारत सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से इस ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किया गया। ये साल आप सब लोगों को मालूम है इंडिया 75 इयर्स इंडिपेंडेंट सेलिब्रेशंस आज़ाद का अमृत महोत्सव देश भर में हम बड़ा दृष्टिकोण से हम कर रहे, मगर कोरोना के कारण जितना हम एक्सपेक्टेशन था आज़ाद का अमृत महोत्सव जन भागीदारी उत्सव न हो पाया, मगर भगवान का आशीर्वाद से कोरोना अभी कम हो गया, वैक्सीनेशन भी पूरा जनता को मिल रहे। इसके कारण आज़ाद का अमृत महोत्सव और 2023 अगस्त 15 तक इस कार्यक्रम चलेगा। कल्चर डिपार्टमेंट भारत का आज़ाद का अमृत महोत्सव का नोडल मिनिस्ट्री है। इस कारण से हम सभी मिनिस्ट्री को कोऑर्डिनेशन करते हुए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, एनजीओस को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उनको कोऑर्डिनेशन करते हुए आज़ाद का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आने वाले दिन में और जन भागीदारी करने के लिए हम पूरा एक्शन प्लान बनाए। अभी जो म्यूजियम्स है, म्यूजियम्स भी हम सुभाष चंद्र बोस जी का
म्यूजियम बना रहे और जगह जगह बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा एक ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट का झारखंड में किए थे। जिस जेल में वो शहीद हो गया उस जेल को हम अभी म्यूजियम बनाया। वैसा ही इस समिट में आने वाले दिन में देश में जो म्यूजियम्स और न्यू टेक्नोलॉजी कैसा होना चाहिए, जो नया म्यूजियम्स कैसा बनाना चाहिए, कौन सा देश में म्यूजियम चलाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या एसओपीस वो लोग फॉलो करते हैं, उस पूरा भारत में आने वाले दिन में लाने के लिए हम प्रयास करें। अभी इस कॉन्फ्रेंस में 70 कंट्रीज से डेलीगेट्स पार्टिसिपेट्स हो रहे और 29 स्पीकर्स फ्रॉम 8 कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट स्पीकर्स भी इस 2 दिन का वर्कशॉप में भागीदार होंगे। हम पूरा भारत के लिए, भारत में आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले नवा युवा के लिए ये हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज हम प्रिजर्व करना चाहते हैं म्यूजियम्स के द्वारा। इसके लिए भारत सरकार बहुत कुछ काम कर रहे। अभी आप सब लोगों को मालूम है इस म्यूजियम के लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम फाइनेंस करते हैं। आने वाले दिन में न्यू टेक्नोलॉजी भी सभी म्यूजियम में यूज करने के लिए हम प्रयास करने वाले हैं। आप सब लोगों को मालूम है सिंस 1976 55 आर्टिफैक्ट्स एंटिक्विटीज भारत में लाए गए विदेशों से। वो भारत का ही था, अलग अलग समय पर वो हमारा देश से विदेश को गया था। वापस लाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, हमारा कल्चर डिपार्टमेंट बहुत कुछ प्रयास करके विदेश के अलग अलग गवर्नमेंट से बातचीत करके अभी 55 आइडियल्स एंड आर्टिफैक्ट्स एंड एंटिक्विटीज भारत लाए गए। आउट ऑफ 55 42 was returned after 2004 during the tenure of the Sri Narendra Modi. Out of 55, 42 are 54. 2014 के बाद 42 आया 55 में। आप सब लोगों को मैं अन्नपूर्णा देवी a latest ideal we received from Canada, वो वाराणसी में अभी वो स्थापना किया गया और 154 more antiquities have been identified from USA, वो भी भारत पहुंच चुके हैं। वैसा हमारा सरकार कल्चरल डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करते हुए एक भारत का हेरिटेज एंड कल्चर प्रिजर्व करने के लिए हम प्रयास कर रहे। हम कल्चरल एक्टिविटी की जोनल का कल्चरल सेंटर्स के द्वारा वो भी इंकरेजमेंट कर रहे। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अभी बहुत जगह हम कुछ टेम्पल्स है, कुछ पोर्ट्स है, लगभग 4000 मॉन्यूमेंट्स हम हमारा एएसआई के द्वारा हम मेंटेनेंस करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। और हैदराबाद में भी सालारजंग म्यूजियम बहुत बड़ा हिस्टोरिकल म्यूजियम है, हमारा डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं। वो म्यूजियम भी बहुत मॉडर्न स्टाइल से इमेज कंटिन्यू करते हुए उस सालारजंग म्यूजियम को एंकरेजमेंट करें। और ये टुडे इस समिट में आजाद का अमृत महोत्सव के संदर्भ में ये 2 दिन का इसका वर्कशॉप में अलग अलग डिस्कशन होगा। आई रिक्वेस्ट लिली पांडे जी टू गिव 2 days इस समिट इन डिटेल। Thank you so much, sir. Welcome all of you to this. म्यूजियम्स को हम नए म्यूजियम्स को ग्रांट दे रहे और तेलंगाना में भी 5 म्यूजियम्स को भी हम
भारत सरकार की ओर से ग्रांट दे रहे। उसमें हमारा खुद का एक सालारजंग म्यूजियम भी है। उसके अलावा हम 5 म्यूजियम्स, अभी रिसेंटली एक ट्राइबल म्यूजियम रामजी गोंडू कोमरम भीम के नाम पर हैदराबाद में सेटअप करने के लिए भारत सरकार मंजूर दिया गया। उसके लिए हम 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी वी रिलीज 1 करोड़ फॉर दी तेलंगाना गवर्नमेंट। वैसा ही अल्लूरी सीतारामराजू एक ट्राइबल लोगों के साथ एक फ्रीडम मूवमेंट चलाया इन आंध्र प्रदेश में ब्रिटिश के खिलाफ। अल्लूरी सीतारामराजू का इस साल 125 ईयर सेलिब्रेशंस भी होने वाला है। इसके लिए एक म्यूजियम लंबा सिंह गांव जो विशाखापट्टनम में होता है, एक ट्राइबल म्यूजियम अल्लूरी सीतारामराजू का हिस्ट्रीज के साथ ओपन करने के लिए 35 करोड़ के रुपीस से उधर भी एक ट्राइबल म्यूजियम आंध्र प्रदेश में हम कंस्ट्रक्शन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से हम कोऑपरेशन के साथ वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहे। नेक्स्ट ईयर जो अल्लूरी सीतारामराजू का बर्थडे 125 ईयर्स है, आज़ाद का अमृत महोत्सव भी है। इसी दृष्टिकोण से वो कार्यक्रम म्यूजियम 2 म्यूजियम बनाने का भी निर्णय हुआ है। और वैसा ही देश भर में मैं बताया अलग अलग म्यूजियम्स, नए म्यूजियम्स सभी जगह गोवा से लेके श्रीकाकुलम तक, श्रीनगर तक अलग अलग म्यूजियम्स हम अभी हमारा सेक्रेटरी बताया। म्यूजियम्स के बारे में आने वाले दिन में प्रिजर्व करना चाहिए। नया पीढ़ी को अपना हिस्ट्री, अपना कल्चर, अपना हेरिटेज, अपने लोगों का जो हिस्ट्री है, जो संघर्ष किया है, पर्टिकुलरली लोकल कल्चर एंड हेरिटेज एंड आल्सो दो फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि आज़ाद का अमृत महोत्सव जो भी फ्रीडम मूवमेंट में भागीदार हुए, कुछ अनसंग हीरोज है, उनका पूरा हिस्ट्री अभी म्यूजियम्स के द्वारा हम प्रिजर्व करने वाले हैं। हम अलग अलग जगह वो कलेक्टिंग शुरू किया है मटेरियल्स। वैसा ही जो आज़ाद से ले अभी तक जितने प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर भी म्यूजियम, एक ही म्यूजियम में 14 पार्ट्स बनाकर एक म्यूजियम दिल्ली में तैयार करे। ये हिस्टोरिकल डिसीजन है प्रधानमंत्री का। सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लेटेस्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर तक, जो यूपीए प्राइम मिनिस्टर तक वो म्यूजियम रहेगा। 14 प्राइम मिनिस्टर्स का म्यूजियम्स हम ये इसी साल में बहुत स्पीड से उसका एक्टिविटी चल रहे। हम पूरे मटेरियल भी कलेक्ट कर रहे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे, उनका हिस्ट्री भी कलेक्ट कर रहे, सब प्रिजर्व करने के लिए भारत सरकार ने तय किया है। बोलिए। मगर क्या होता है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है नाम्स के आधार पर, इसलिए ऐसा सिटी, ऐसा हेरिटेज सिटी के नाम पर कोई घोषणा का कोई ऐसा नहीं है हमारे पास। मगर अभी अगर पूरा सिटी में घोषणा किया है, पूरा अलग अलग प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्शन में, उधर में परमिशन लेने में लोगों को तकलीफ हो सकता है। इसलिए हम हैदराबाद में गोलकोंडा हम हेरिटेज सिटी के नाते घोषणा किया है। हमारा कंट्रोल एएसआई के कंट्रोल में जो जितने भी टूम्स है, टूम्स भी विकास के लिए अभी टूम को पैसा दिया है। अभी स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहिए, उसका टूम्स के लिए हम पैसा दिया है सर्किट के नाम पर। हेरिटेज सर्किट हैदराबाद में एक बनाए, उसमें टूम्स भी है। चार मीनार भी हमारा हेरिटेज के नीचे आते हैं। उसके बाद रामापा टेम्पल अभी भी यूनेस्को का हेरिटेज मिला है। भारत सरकार के प्रयास से उसका भी डेवलपमेंट करने के लिए हम प्रयास करें। उसके बाद 100 पिलर टेम्पल्स भी है और वरंगल का पोर्ट भी है। उसके साथ साथ जोगलांबा टेम्पल है। ऐसा जगह रहे। संगारेड्डी में एक्सकवेशन भी हो रहे, एक्सकवेशन काम संगारेड्डी के जगह काम चल रहे, उसका भी एक्सकवेशन चल। उधर छोटा म्यूजियम भी बनाया। जिधर भी जितने जगह भी एक्सकवेशन होता है, अलग अलग जगह एक्सकवेशन में जो भी मिलते हैं वो सब उधर ही रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं। हैदराबाद में एक साइंस सिटी का हम घोषणा किया है। हैदराबाद में साइंस सिटी
क्योंकि हैदराबाद में साइंस सिटी नहीं है, सेंटर भी नहीं है। इसके लिए साइंस सेंटर हो, साइंस सिटी थोड़ा बड़ा दृष्टिकोण से बनता है। लगभग 25 एकड़ में रहते हैं। प्रांत भर से, अलग अलग जिलों से, यूनिवर्सिटीज़ के, एनजीओस के द्वारा स्टूडेंट्स, रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स सभी लोग उसमें आके रिसर्च कर सकते हैं। अलग अलग स्कूल के पूरे स्टूडेंट्स बसेस में आके वो साइंस सिटी में बता सकते हैं। वैसा उसको 25 एकर्स का लैंड चाहिए। मैं मुख्यमंत्री स्वयं, तेलंगाना मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा हूँ। साइंस सिटी हम इधर अपने सैंक्शन किया है। जितना जल्दी उतना लैंड अगर वो आइडेंटिफाई करके भारत सरकार को बताए तो तुरंत साइंस सिटी हैदराबाद में बनाने के लिए निर्णय हुआ है। किशन रेड्डी साहब, विरासत का तहफ़्फ़ुज़ का नारा है आपका, तो నిజాం నగలు మా సాలార్జంగ్ మ్యూజియమే ఎక్కువ చూస్తారు. వారిని డైరెక్ట్ మాట్లాడితే ఇన్ డీటెయిల్గా ఇస్తారు. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే కాదు, 10-15 సంవత్సరాల నుంచి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ముందు దారుషఫా ఇస్తామన్నారు, తర్వాత ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ స్పేస్ ఇస్తే దెన్ డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నేను కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను మ్యూజియం తరఫున పెట్టడానికి. నిజాం నగలు పెట్టడానికి కావాల్సినటువంటి స్థలము అంటే చాలా ప్రొటెక్టెడ్తో కూడినటువంటి భవనం ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తే, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా గతంలో నిర్ణయం జరిగింది కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సకాలంలో ఇవ్వలేని కారణంగా అది అక్కడనే ఉండిపోయినాయి. కాబట్టి అది భవిష్యత్తులో ఇస్తే తప్పకుండా నేను యాజ్ ఎ మినిస్టర్ నేను కూడా దాన్ని ప్రయత్నం చేసి తీసుకొస్తాను. ఐ రిక్వెస్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ ప్లేస్ ఫర్ నిజాం ఆర్నమెంట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ. రీజనల్ సైన్స్ సెంటర్ వరంగల్లో నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున 50%, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున 50% చొప్పున ఇన్నోవేషన్ హబ్ రీజనల్ సెంటర్ ఇన్ వరంగల్ అది నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. ఒకటి అదే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సైన్స్ సిటీ హైదరాబాద్లో ఇచ్చాం. అదేవిధంగా రీజనల్ సైన్స్ సెంటర్ తిరుపతి అది కూడా నిర్వహణ జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా రాజమండ్రిలో ఒక న్యూస్ సైన్స్ సెంటర్ రాజమండ్రి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అది కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. అది కూడా ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తాం. ఈ కాన్फ्रेंसలో डिफरेंट म्यूजियम्स इन दुनिया के जितने भी म्यूजियम्स है, बेस्ट म्यूजियम्स भी है, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स ही है, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को आने वाले दिन में इंडिया का म्यूजियम्स में कैसा यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसा उपयोग कर सकते हैं, ये भी इस म्यूजियम्स का जो ग्लोबल समिट में एक बड़ा हमारा लक्ष्य है. उस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा दुनिया के जो एक्सपर्ट्स है आने वाले दिन में, ये फर्स्ट ग्लोबल समिट है, आने वाले दिन में वी वांट टू कंटिन्यू विथ, क्योंकि कोविड के समय पे कम समय में इसका निर्णय हुआ है. आने वाले दिन में और सभी लोगों का, शेयर होल्डर्स का, आम जनता का, एक्सपर्ट्स का भी इसमें और भागीदारी करेंगे. अभी लगभग 3000 लोग अभी इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, जो दुनिया भर के, नॉट ओनली इन इंडिया, अलग अलग देशों के जो इस म्यूजियम्स में इस सेक्टर में काम करते हैं, इंटरेस्ट रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो सभी लोग इस कॉन्फ्रेंस में 3000 लोग रजिस्ट्रेशन करके भागीदारी हुआ है. इसके संदर्भ में जब भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, देश भर से, दुनिया भर से जो 70 कंट्रीज डेलीगेट्स है और 8 कंट्रीज के 29 स्पीकर्स भी इसमें 2 दिन का सेशंस में भागीदार होंगे. डेफिनेटली है वर्चुअल विजिट. वो पैंडमिक के समय सबसे बड़ी जो नहीं जा सकते हैं क्योंकि म्यूज़ियम को बंद करना पड़ा, सारे पब्लिक प्लेसेस को बंद करना पड़ा जिसमें म्यूज़ियम्स भी थे. तो म्यूज़ियम आपको किस तरीके से पहुंचाया जाए, म्यूज़ियम के कलेक्शंस कैसे ऑनलाइन क्यूरेशन किया जाए गैलरीज का. गूगल आर्ट्स के साथ मिलके हमारे कई म्यूज़ियम्स ने ये स्टेप उठाया है और हमारा भी यही प्रयत्न रहेगा कि हम लोग
इस इस डायरेक्शन में काफ़ी काम करें। इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी काफ़ी की गई है इस तरीके से कि जैसे पुरानी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने आ जाएं, आपको लगे कि आप उसी समय में, उसी कालखंड में आप जी रहे हैं और आपके सामने वो सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे कई म्यूज़ियम्स ने ऐसा किया है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप लोग आके देखिए उसे और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ साझा करना चाहूँगी, वो ये है कि ब्लूमबर्ग के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है और उनका बहुत योगदान रहा है इस महत्वपूर्ण फील्ड में, और उनके साथ मिलके हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इस तरीके के इंटरनेशनल समिट्स, जैसा कि सर ने कहा, उसके कुछ और स्पिन ऑफ्स करते रहें और लगातार प्रयास करते रहें, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहे। जैसे अगला एक राउंड टेबल हो सकता है, एक ट्रैवलिंग एग्जीबिशन हो सकता है, एक हैकाथॉन हो सकता है। तो म्यूज़ियम मूवमेंट को हम लोग किस तरीके से बढ़ावा दें और बिल्कुल कंसिस्टेंट रहें इस पथ पे, यही हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू। तेलंगाना में सुंदरय विज्ञान केंद्रम, उस म्यूजियम के लिए भी डीपीआर बनाने के लिए हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। हैदराबाद में भी है, वो भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, वो कंप्लीट होगा। और पोटी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी हैदराबाद, उधर भी अंडर प्रोग्रेस है। हम उधर भी म्यूजियम के लिए केंद्र सरकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। आंध्र प्रदेश स्टेट म्यूजियम हैदराबाद वो अलग है, वो भी अंडर प्रोग्रेस है। उसके साथ अभी जो एपी पुलिस अकादमी गोलकोंडा, उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार के द्वारा दिया है, वो भी अंडर प्रोग्रेस है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम हैदराबाद, वो भी अंडर प्रोग्रेस है। और स्टेट फोटो म्यूजियम हैदराबाद, वो भी अंडर प्रोग्रेस है। आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन फॉर रीजनल म्यूजियम, तेलंगाना डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रीजनल म्यूजियम बुद्धिस्ट हेरिटेज नलगोंडा, उनको भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, वो भी अंडर प्रोग्रेस है। उसके साथ साथ मैं अभी बताया ट्राइबल म्यूजियम, वो भी पेंडिंग है, उसके लिए 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1 करोड़ ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज किया गया, मगर लैंड अभी फाइनल नहीं किया। जैसे भी लैंड फाइनल करके तो हैंड ओवर करे तो ट्राइबल म्यूजियम का पूरा पैसे रिलीज करके वो भी म्यूजियम बना सकते हैं।